Hi guys and welcome back to our channel again. I'm posting a video in between the week because since Rakshabandhan is coming, everyone is preparing for it. We have Rakhis, Thalis, all the puja stuff that we do. While I was preparing for Rakshabandhan, I also started making a thali. So I thought I'll share that idea with you guys as well. Along with that, I came up with another third version of the living Rakhi. So here is a new way that you can make the Rakhi. Before I start the video, please don't forget to like, share and subscribe, and hope you guys like this video. So let's get started. थाली के लिए मैंने एक रेड कलर का कपड़ा ले लिया है थाली कवर करने के लिए। यहाँ पे छोटे से डेकोरेशन पीसेस ले लिए हैं जिसमें शीशे का काम हुआ है। सिजर्स, ऑल पिन, एक छोटी सी ट्रे जिसमें मैं रोली और चावल रखूंगी, फैब्रिक ग्लू, एक छोटी सी बास्केट जो मेरे पास पड़ी हुई थी, मेजरिंग टेप जिससे हम लोग थाली मेजर करेंगे, एंड ये साड़ी का एक बॉर्डर जिससे हम लोग एजेस में लगाएंगे। ऊन की बर्ड बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 3 तरह के ऊन, सिजर्स, सुई धागा, 2 छोटे से पर्ल्स आंखों के लिए, एंड एक गत्ता 12 सेंटीमीटर्स बाय 8 सेंटीमीटर्स।
Wishing you all a very, very happy Rakshabandhan. Hope you have an amazing, fun-filled day, and may God bless all our brothers and give them a very, very long life. If you liked the video, please don't forget to like, share, and subscribe. See you next time.